अस्सलामुअलैकुम। cs601 का क्विज़ नंबर 6 ओपन हो गया है। सिलेबस क्या है इसका देख लें। लेक्चर यानी कि इसमें मॉड्यूल्स होते हैं ना, तो 101 से लेकर 204 तक जो है मॉड्यूल्स हैं, क्विज़ नंबर 6 में आएंगे। ठीक है, तो चलें शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल यूजेस बोथ डैश फ्लो एंड एरर कंट्रोल। ठीक है, टू क्वेश्चन है कि विच फेज ऑफ कम्युनिकेशन इज इन CSM में डिवाइड बाई CA इन्वॉल्व्स द यूटिलाइजेशन ऑफ RTS फ्रेम्स। क्या होता है? चैनल रिजर्वेशन। इन CSM में CA डिवाइड बाई इज द अमाउंट ऑफ टाइम डिवाइडेड इनटू स्लॉट्स। तो क्या होता है? कंटेंशन विंडो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोड C1 एंड C2 इन CDMA प्रोड्यूस द वैल्यू डैश 0। ठीक है, 5 क्वेश्चन है, इन रैंडम एक्सेस मेथड व्हेन 2 और मोर देन 2 नोड्स transmit frames at the same time then dash all the frames in collision are lost. Sixth question, in order to find the location of two errors in an 8-bit stream, we have to see dash different combination 28 different combination. डाटा बिट 0 का मतलब क्या है? -1। ठीक है, ये आगे नीचे टेबल भी एक आएगा, उसमें देख लेंगे। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल्स फॉर पॉइंट टू पॉइंट एक्सेस इज डैश PPP. नेक्स्ट है, इन डैश अ स्टेशन मॉनिटर्स द मीडियम आफ्टर इट सेंड्स अ फ्रेम टू सी इफ द ट्रांसमिशन वाज सक्सेसफुल। क्या होता है? CSM डिवाइड बाई CD। 10 क्वेश्चन है, डैश आर यूज टू एक्सचेंज सेशन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन बिटवीन कनेक्टेड डिवाइसेज। तो क्या होता है? U फ्रेम्स। 11 क्वेश्चन है, डाटा ट्रांसमिशन सफर्स अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस बिकॉज ऑफ डैश इंटरफेरेंस। द डैश कैन चेंज द शेप ऑफ दिस सिग्नल। इंटरफेरेंस चेंज करता है। ठीक है, डैश कौन सा एरर होता है? मीन्स दैट 2 और मोर बिट्स इन द डाटा यूनिट हैव चेंज फ्राम 1 to 0 और फ्राम 0 to 1। तो ये होता है ब्रस्ट एरर। To be able to detect or correct errors, we send some dash with our data. We send some extra bits. Next, correction is more difficult than the detection. Simple bit error is same as dash burst error. ठीक है, सिंगल बिट और एरर और burst error दोनों एक जैसे ही हैं, सेम है। Dash mostly used at the network and transport layer rather than the data link layer। क्या होता है? checksum। 18 क्वेश्चन है कि इफ फ्रेम्स आर प्रोड्यूस्ड फास्टर देन दे आर कंज्यूम्ड एट द रिसीविंग डाटा लिंक लेयर द फ्रेम्स विल बी डैश डिस्कार्डेड। 19 क्वेश्चन है, इफ द टू पार्टीज यूज अ बफर विद ओनली वन स्लॉट द कम्युनिकेशन कैन बी डैश ईजियर। द रिसीवर कैन इमीडिएटली हैंडल एनी फ्रेम इट रिसीव्स एजम्पशन। ठीक है, 21 क्वेश्चन है, मिलियंस ऑफ इंटरनेट यूजर्स हु नीड टू connect their home computers to the server of an internet service provider use dash PPP. CSM डिवाइड बाई CA was invented for dash wireless network के लिए इन्वेंट हुई है। Time is divided into dash intervals. 24 क्वेश्चन है, dash work with topologies in which one device is designated as a primary station and the other device is a secondary station। तो क्या होता है? ये पोलिंग होता है, पोलिंग वर्क्स। The primary device controls the link, the secondary devices follow its dash instructions. The predecessor is the station which is logically dash the station in the ring before. The successor is the station which is after the station। ठीक है, इनके predecessor में before है और successor वाले में after है, याद रखना है। Stations share the bandwidth of the channel in dash time. Which one of the following is a random access protocol? ALOHA. The primary cause of unpredictable changes in bits during data transmission is dash interference. And RTS frame in CSM divided by CA includes the dash duration of time needed to occupy the channel. No matter whether the link is dedicated or broadcast, data link control DLC layer provides services between dash two adjacent nodes. Next 33 क्वेश्चन हमारे पास के विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। क्या होता है? CSMA। इफ द हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन सेंट एंड रिसीव्ड कोड वर्ड इज डैश देन इट शोज दैट रिसीव्ड डाटा इज करप्टेड। क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0। 35 क्वेश्चन, विच कंपोनेंट ऑफ CSMA डिवाइड बाई CA इंट्रोड्यूसेस randomness in the waiting time before attempting or transmission। तो होता है contention window।
ये आगे टेबल आ गया कि अगर डाटा बिट 0 होगा तो उसका मतलब क्या -1, डाटा बिट 1 होगा तो मतलब क्या +1, और अगर जहाँ पे खामोशी होगी यानी साइलेंस होगा तो वहाँ क्या होगा 0 होगा। ठीक है, ये टेबल आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्या है कि पैकेट स्विचिंग ऑपरेट्स ऑन डैश लेयर नेटवर्क लेयर। RG11 having impedance of 50 ohm is used in dash Ethernet gigabit Ethernet. In single crossbar switch only dash rows or column is are active at a time while others are not active. तो क्या होता है 1, ठीक है 1 रो। 39 question in a circuit switch network the link between the switches is separated into dash number of channels and the fiber optic possess layer of dash right inside after outer jacket। क्या होता है cladding। Dash is responsible for governing node to node communication data link layer। Cellular telephones uses dash waves for communication radio waves। In dash systems resources are allocated on demand packet switching 44 question है cable TV networks use dash cables coaxial cable। 45 question है fiber optic cable transmit signals in the form of dash light। 46 question in the context of Ethernet implementations maximum medium length of 10 base f was dash 2000 meters। In the dash method the stations in a network are organized in a logical ring। तो क्या होता है token passing। In dash each station is forced to send a frame only at beginning of time slotted aloha। Dash uses thin coaxial cable 10 base 2। ठीक है, 50 वाला डैश वर्क्स विद टोपोलॉजीज, ये वाला हो गया मेरे ख्याल से पोलिंग वाला ना। नेक्स्ट है मैक एड्रेस इज ऑफ डैश 48 बिट्स। इन डैश अ स्टेशन मॉनिटर द मीडियम आफ्टर इट सेंड्स अ फ्रेम टू सी इफ द ट्रांसमिशन वाज सक्सेसफुल CSM and CD। मैक स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल CSMA। In pure Aloha the vulnerable time is dash the frame transmission time 2 times। डैश was used as the medium in 10 base T। तो क्या होता है वो twisted pair cable। In hexadecimal notation of Ethernet address each byte is separated by dash symbol colon। Ethernet address is of dash bytes 6 bytes। Each station is allocated a time slot during which it can send data TDMA। ठीक है, 60 सवाल है इन Ethernet frame both destination and sender addresses are of length dash 6 byte। Uses thin coaxial cable 10 base T। The dash method has the highest chance of collision because 2 or more stations may find the line idle and send their frames immediately। तो क्या होता है persistent method। MAC addresses of 48 bits। ठीक है, नेक्स्ट का इन CSMA divided by CA dash is the amount of time divided into slots interframe window। नेक्स्ट क्या हमारे व्हाट वाज द मेन ड्रॉबैक इन अलोहा, तो क्या होता है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इसमें सारे आ जाएंगे ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हमारे पास इन डैश स्टेशन मॉनिटर द मीडियम आफ्टर इट सेंड्स अ फ्रेम टू सी इफ द ट्रांसमिशन वाज सक्सेसफुल CSMA divided by CD। इन डैश ईच station is forced to send a frame only at beginning of time slotted aloha। ये वाला फिर आ गया पोलिंग वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्या है डैश ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन इंटरनेट प्रोवाइड्स अ डाटा रेट ऑफ 1 बिलियन बिट्स पर सेकंड गीगाबिट इंटरनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंट्रोल्ड एक्सेस मेथड। तो उसमें क्या टोकन पासिंग ऑल ऑफ दिस पोलिंग रिजर्वेशन, तो क्या होता है ऑल ऑफ दिस। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज एन डैश लेयर प्रोटोकॉल सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एप्लीकेशन नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन। तो इसमें से आप खुद देख लेना, ये तीनों चारों नेटवर्क लेयर पड़ी हुई हैं, इनमें से जो सी अच्छी लगे वो सिलेक्ट कर लेना। यूजेस द कोएक्सियल केबल 10 base 5। In circuit switching when two and devices A and B connects with each other they send dash request setup। Dash and dash are the two types of addressing in a virtual circuit approach, local and global। Datagram approach and virtual circuit approach are two popular approaches which led us to dash packet switching। Switching at the dash layer in the traditional telephone network uses the circuit switching approach network layer। In datagram network, each packet contains its address। In dash systems, resources are allocated on demand packet switching।
A local telephone network use circuit switch network. According to stats, fewer than 25% crossbar points can be used at once. The Ethernet LAN was developed in the 1970s. स्टैंडर्ड इथरनेट कितना होता है 10 Mbps. फास्ट इथरनेट कितना होता है 100 Mbps. गीगाबिट इथरनेट कितना होता है 1 Gbps. 10 गीगाबिट्स कितना होता है 10 gigabits per second. Each station on Ethernet has its own dash network interface called NIC. ITU-T standard called dash synchronous digital hierarchy SDH. नेक्स्ट क्या है, वी कैन रफली डिवाइड सोनेट नेटवर्क इनटू तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. क्या क्या होते हैं, लीनियर नेटवर्क, रिंग नेटवर्क, मैश नेटवर्क. डैश वाज ओरिजिनली एन एनालॉग सिस्टम यूजिंग एनालॉग सिग्नल्स टू ट्रांसमिट वॉइस. तो क्या होता है, प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम पोर्ट्स. द टेलीफोन नेटवर्क इज़ मेड ऑफ 3 मेजर कंपोनेंट. 3 कौन से कंपोनेंट होते हैं, लोकल लूप्स, ट्रंक्स, स्विचिंग ऑफिसेज. द टेलीफोन नेटवर्क हैज़ सेवरल लेवल्स ऑफ स्विचिंग ऑफिसेज. तो कौन सी 3 चीज़ें होती हैं, एंड ऑफिसेज, टेंडेम ऑफिसेज, रीजनल ऑफिसेज. तो ये हमारे पास जो है सारे जो है सवालात थे, काफ़ी ज़्यादा सवालात थे क्योंकि ये जो क्विज़ था ना, क्विज़ से इसमें काफ़ी सारे मॉड्यूल्स शामिल थे 1 से लेकर 2 से 4 तक. ठीक है, तो ये आपने लाजमी वीडियो देखनी है. लाजमी आपने कमेंट करके मुझे बताना है कि वीडियो कैसी लगी है आपको. चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू.